हाय हीरो सूर्यकांत, यू ऑल अबाउट पंजाब केसरी। मैं हूँ आपके साथ नमिता से। वेल, आज के इंटरव्यू में ना मुझे नॉस्टैल्जिया होने वाला है, क्योंकि जिस चेहरे को आज मैं देखने वाली हूँ, जब भी मैं उनको टीवी पे देखा करती थी ना, टेलीविजन में, सिनेमा पे, लेकिन आज मेरे सपने को सच कर दिया है द वन एंड ओनली वन ऑफ हर काइंड फिल्म मेकर तनुजा चंद्रा मैम ने। सो वेल, पहले तो मैं उनका थैंक्स कर रही थी, लेकिन आज हमारे साथ तनुजा चंद्रा मैम तो है ही है। वेलकम मैम, हाउ आर यू? तनुजा मैम। I thought she was... यस, और उनके उनके साथ में हमारे साथ वो परी है जिनको फलक से लाकर जमीन पर खड़ा कर दिया है तनुजा मैम। यस, मेरी नजर में। सो जूही चावला मैम इज विद अस। जूही मैम, तनुजा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? Thank you. Thank you for that lovely introduction. Yeah. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट लवली स्माइल एज ऑलवेज। Yeah. अरे, There was... आपकी भी कोई कम नहीं है। थैंक यू सो मच, हैव मेड माय डे। तो तनुजा मैम, माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू। कहाँ से आया ये ख्याल आपके जहन में कि कुछ इस तरह का बनाया जाए, हश हश जैसा, कि सब लाइक मैं कहूंगी सारी वुमेन पावर को एक साथ लिया जाए? मुझे तो बहुत सालों से इस बात की ख्वाहिश थी कि इस तरह की कहानी जिसमें मल्टीपल फीमेल प्रोटैगनिस्ट हों, उनकी अलग अलग कहानियाँ हों। ऑफ कोर्स OTT से हमको ये सुविधा और ये लग्जरी मिली है कि एक एक्सटेंसिव कहानी सुना सकें, जिसमें बिकॉज इन फिल्म्स 2 घंटे की जो लिमिटेशन होती है उसमें आप डिटेल में नहीं घुस सकते ऑफ मल्टीपल लाइव्स। So this was to me a very beautiful opportunity to do that and to have diverse women, अलग अलग किस्म की औरतें, अलग अलग एजेस की, and also personality wise, so it was a very very interesting mix for me. मेरे लिए तो मुझे तो पता है कि दुनिया में इतनी सारी महिलाओं की कहानियां हैं, so हर बार मुझे सुनाने में उतनी ही खुशी होती है, और according to me there should be many many more. तो जूही मैम को कितना वक्त लगा इसके लिए हाँ बोलने में? मतलब वो तनुजा मैम कन्विंसिंग इनफ फॉर यू टू से यस फॉर दिस वन? So वक्त मुझे हाँ बोलने में नहीं लगा, उसके बाद जो मैंने इनका वक्त लिया है ये हमेशा याद रखेंगे, और मैं भी कि हमने इतने डिस्कशन अभी याद कर रहे थे हम कि आपके साथ जूम पर ये क्या बोलते हैं, इंटरव्यू हो रही है, तो इसी तरह मैं इनके साथ डिस्कशंस करती थी जूम पर, क्योंकि मैं युगांडा में थी और ये यहाँ मुंबई में, तो सारे सीन्स को लेकर, एक एक लाइन को लेकर हमने डिस्कशन किया है। फिर उन्होंने कुछ कभी बदलने दिया, कभी उन्होंने ही बदल दिया, ऐसे कर करके हमने एक एक सीन को समझा है, क्योंकि मेरा रोल कुछ ऐसा था कि मुझसे बहुत अलग था, एंड ऑल्सो वो जो कर जाती है इशी इस सीरीज में, उसके लिए आई नीडेड टू वर्क बैकवर्ड्स कि ये कैसे हो जाता है। Yes. So basically it was just an in-depth discussion every time about the character, about the plot, and in fact I remember I used to say, okay, let's speak at about, we usually used to speak in the night, 8 o'clock, 9 o'clock, so then she used to say keep 2 hours. थोड़ा लंबा हो ही जाता था, but she was really, like, I must say, as a director she was so patient and she was so welcoming and also cheerfully, मतलब हम जब भी कोई भी डिस्कशन हुआ, she was very open to it, very very open to it. ये बहुत कम लोगों में ये खूबी होती है, because sometimes when they've written something they will not move from it, but she was open to it कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, या हम इस तरह कर सकते हैं, or what are you comfortable with, and I'm so thankful for that, because it made it easier for me to perform. Obviously मुझे लगता है कि एक्टर के लिए भी जो इम्प्रूव्ड हिज और हर कैरेक्टर अ लॉट, है ना? तो इम्प्रोवाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इवन इफ व्हाट द डायरेक्टर हैज रिटन। कहते हैं कि एन एक्टर इज अ डायरेक्टर्स एक्टर, लेकिन फिर भी वो ओपननेस होना काफी जरूरी है। क्या कहेंगी जो इस बारे में? ओपननेस होना जरूरी है, हाँ, ऑफ कोर्स। आई थिंक बोथ वेज, एक्टर में भी एक ओपननेस होना जरूरी है एंड डायरेक्टर में भी ओपननेस होना जरूरी है, बिकॉज शी इज ब्रिंगिंग एन एंटायर लाइफ टाइम विद हर एंड एन एक्सपीरियंस, तो ऑब्वियसली थॉट्स एंड आइडियाज आर इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन टू। और फिर क्या होता है कि अगर वो मुझे कुछ
कहेंगी, सजेस्ट करेंगी, वो मेरे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस ट्रिगर करता है. तो ज़रूरी नहीं कि हम वही करेंगे, लेकिन उससे जो आगे बढ़ के हमारे डिस्कशन से जो हमको फाइनली मिलता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी दैट इज़ मच बेटर देन व्हाट वी स्टार्टेड आउट विद. So that I love to do. तो तनुजा, जिस तरह से आप विमेन सेंट्रिक सब्जेक्ट पे काम करती आई हैं, काफी अच्छे से आपने प्रेजेंट किया द रोल ऑफ विमेन एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स लेकर आते हो. संघर्ष की बात करें, दुश्मन की बात करें, अभी हर्ष की भी बात करें, स्टोरी ऑफ 4 women around of different ages, different thought process. So what do you think today in the industry, the perspective of looking at females or women especially, I would talk about, has been changed a bit, जैसा पहले था उसके मुताबिक? Yes, there is some change, not as much as I would like it to be. I would know it's not as common as I would like it to be, but I'm thinking of an ideal situation when half the stories should be about women. So we haven't reached that stage, but we are inching towards it, and I do think OTT has really given us that beautiful wide field in which to play, you know, with all this, and I'm really excited about the fact that we you know, producers are funding it, for funding stories like this, and platforms are inviting stories about women. It's high time, frankly, if you ask me. It's already too late, but I'm glad it's happening. अच्छा, 80s का 90s का ये दौर ऐसा था जो जूही मैम के नाम ही था, मतलब है ना कि इनकी एक मुस्कुराहट पे फिल्म हिट हो जाती थी, एक आंसू निकलता था तो लोग अपने घरों में बैठ के रोने लग जाते थे. मैं कहूंगी वो टाइम अच्छा था शूटिंग के लिए, या फिर ये टाइम आपको ज्यादा अच्छा लगता है फॉर फीमेल्स व्हेन दे आर वर्किंग हियर इन द इंडस्ट्री? आई थिंक आई हैव एंजॉयड इट थ्रू आउट, क्योंकि वो उस समय सजता था, मुझ पर भी मेरे को लगता है उस समय मैं वो कर पाती थी. And actually now I feel I cannot do what I did earlier. I actually cannot. Anybody may say anything, but then I've also grown as a person, and इस समय आप real कहानियाँ ज़्यादा बोल रहे हैं on these platforms, and even in films you see a lot more real people. This is also interesting. So I'm happy at anything. I'm really happy with whatever's happening. In a way, it's a nice journey for an actor, actually. Thing. Do that and then do something else. So it's an ongoing journey, as actually everything in life should be, because things with time change, and so also your parts have changed, and you know what she plays has changed, stories have changed, as they should. Really, nothing should be static for too long. Does that make any difference? Because we got to know that there were all females around, है ना, when you were shooting also. Most of the crew members were also females, है ना? And in the shooting also, you were all women working together. So any difference does that make when you're shooting for a film or a web series? It would be different for an actor, and it would be different for a director. You know, the experience of having a female crew and cast, for me, it is something that I have mindfully and consciously done. I have sought out more women to work with, because I do think that one needs to actually do it consciously, otherwise change won't come about. You know, you have to put yourself out there and say that this is what I'm willing to take a risk with, and not only on what comes on screen, not only the subjects, but also our workforce, you know. And I've always felt really comfortable. I enjoy it a great deal. I've enjoyed working with men too, but it's different. It's different when it's a woman, you know, when there's a lot of women around. And I just it feels nice, warm, safe, lovely. Oh wow, that we can see on your face itself, in your smile. You've expressed it all. And Juhi ma'am, if you want to add something on that. She used to say she used to be surrounded by men at one point, right? Yeah, at one point it was कि हमारे set पे वो आपने सुना भी होगा कि 90s में, early 2000s में it was, अगर 100 लोगों का यूनिट है तो उसमें से 3-4 लेडीज होती थी सेट पे, बाकी सब मेल होते थे. It's only now, my God, gradually it's changed, and you have at least half the unit, and sometimes I feel it's even more, क्योंकि हम उन्हें नहीं गिन रहे जो हमारी टीम है, मेरी खुद की टीम, यानी कि मेकअप, हेयर, स्टाइलिंग, वो एक्चुअली, एंड इवन मैनेजर, सारी लड़कियां हैं. तो ये कैसे ये बदलाव आया, slowly it just happened.
which is lovely. And I'll just say, like, the way I worked with her, as in, I openly discussed things with her and things. I don't know if I would have done it with the same ease had it been a gentleman there. I'm not sure, and I feel I don't think my experience would have been the same at all. So I'm very happy with that. Yes, as an actor, I know at one time जब हम पहले फिल्म्स करते थे और फिल्म में 2 हीरोइंस होती थी, तो तब वन वाज वेरी कॉन्शियस कि भाई वो अगर दूसरी हीरोइन है तो उन्होंने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, तो मैं वो ना पहनूं, वो कहाँ डांस कर रही हैं, तो हाउ एम आई गोइंग टू मैच अप टू दैट, क्योंकि कंपैरिजंस बिटवीन 2 हीरोइंस बिकॉज दे वर डूइंग वेरी सिमिलर थिंग्स वो स्क्रीन पर होता ही था, तो यू वर वेरी कॉन्शियस ऑफ इट. बट एट द सेम टाइम आई से अगर 2 हीरो भी काम कर रहे होते तो मैंने भी देखा हुआ है, वो लोग स्क्रिप्ट पे वो क्या डायलॉग बोल रहा है, मैं क्या बोलूंगा, मेरा कमबैक लाइन क्या है, ये भी होता है. बट इन दिस नाउ आई फाइंड कि जैसे हम थे तो हर एक का रोल बहुत डिफाइंड था, एंड यू प्लेइंग कैरेक्टर्स एंड ईच कैरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. एक कोई सॉफ्ट है तो एक कोई उसका एक्सपीरियंस जो लाइफ का रहा है, दैट हैज मेड हर वेरी वेरी लिटिल नॉट बिटर बट लिटिल स्ट्रॉन्गर, एंड लाइक वो थोड़ी तीखी है, उसका अंदाज ही तीखा है. एक है तो वो एक आर्टिस्ट है, इन द सेंस शी इज अ डिजाइनर, सो शी विल हैव अ लिटिल, डिजाइनर्स हैव अ लिटिल अंदाज अबाउट देम, समथिंग एल्स होता है उनका, बॉडी लैंग्वेज, द वे दे स्पीक, ईच वन हैज अ कैरेक्टर, सो शी हैज हर ओन कैरेक्टर. And I just had to play that, so I never had to worry कि भाई आयशा क्या कर रही है या शाहाना क्या बोल रही है. No, it was a story which kind of just came together because सारी उंगलियां अलग थी. सारी उंगलियां, और वो कहते हैं सब उंगलियां एक बराबर एक जितनी होती भी नहीं है. और बहुत ब्यूटीफुली आपने इस पूरी स्टोरी को वीव किया. मैं कहूंगी आप दोनों से पूछना चाहूंगी, लाइक बीइंग अ फीमेल देयर आर लॉट ऑफ हश हश सिचुएशन है ना, when we are just juggling between our work and our homes, है ना. तो आप लोगों के लिए वो एक हश हश मोमेंट कौन सा होता है या अभी रिसेंटली आपने फेस किया हो? हाँ बोलिए. हम Well, सुनते हैं कि क्या I guess for somebody like Juhi, it would be more difficult in a way because, of course, there's a home life, there's a work life, there's a social service life. So there's lots of things, and I think, honestly speaking, women do have what in film terms is called latitude, which is the ability for film to register different nuances of light. So from different shades. So I think that there's an ability to absorb a lot, and not fall apart. And I genuinely say this not because I'm idealizing women and all that, but I've seen it in family, in friends, around me, the ability to just quietly have this resolution and just take so much within. That to me is so graceful and beautiful, and I do think that like especially now the promotions, yes, we've been having rounds of promotions, so it's a lot of taxing hard work, and then of course going home and doing whatever needs to be done at home. My mother was asking me how's it going, and I was so tired to answer. Yeah, at times you want to go home and just be quiet for a while. Yes. So yeah, so while I can't tell you a specific moment, but I do think that women tend to have this happen constantly. Yes, absolutely. So all the very best to you, I would say, for your future endeavors also. But one question that I would like to ask you in the end, Juhi ma'am, that would we be able to see you like once more if you had to recreate one of your character of your iconic films? Then which one character you would love to like once again recreate on screen? Like recreate? Yeah, that's an interesting question. Which one would you like to? I'll choose the funny ones because that used to come very easily. And it was just fun doing them. Not that I did it all myself. I know, like in a Hamera Hi Pyar Ke or something, Amir used to help me. He used to say, now, how about doing that? Or some silly gesture. He would tell me, so, yeah, ye karte hain. So, I'd love to do the fun films again. Anytime. Any of them. Bhootnath, One to Ka Fort. Even your character in Ishq also, na? Ishq wala character, it was like mind-blowing.
I mean like 1-2 का 4 I know कि हम लोग शाहरुख दिल्ली से है and he knows the Haryanvi accent. Writer has written it with an Haryanvi in mind. I'm playing a Haryanvi. मेरे ट्यूशन्स होते थे green room में. They used to make me say my lines again and again and again so that I'll get it right when I came for the shot. So you know, people have helped me along the way a lot, and it was great fun. So I would love to do any of those again. Yeah, I guess that's nice because she would, I suppose, want to spread that joy again. Yeah, and it was, you spread the joy, but it's first joy for you. You're doing such mad things and getting paid for it and getting dressed up for it. Yeah. Being so natural and effortless is, I think, your USP, both of yours. So thank you so much for joining with us on Punjab Kesari Now the Times. All the very best to you. Please take care. Thank you. Thank you.